Hello friends. So this is Saurabh. As I told you, today I will teach about Bohr model. So ये actually मेरा जो KVS PGT का जो preparatory course है उस series का first video है. So मैं actually today I will teach you about the Bohr model and बेसिकली आज मैं बोर मॉडल ही बोलूंगा और उसका पहला का शुरुआत वो बोर मॉडल का पहला का शुरुआत भी मैं बोलूंगा और जो नेक्स्ट दो वीडियो आएगा वो होगा मैथमेटिकल एप्लीकेशंस और मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द बोर मॉडल्स मतलब है जो बोर मॉडल से जो डिराइव कर सकते मतलब जो बोर मॉडल को अप्लाई करके हम लोग जो डिराइव कर सकते हैं उसका एंड देन आई विल टीच यू और आई विल टॉक अबाउट द applications of these mathematical forms or mathematical derivations from the Bohr model into the hydrogen atom system. So, तीन part होगा. So, in the first part, I'll talk about the theory. So, today मैं theory part ही बोलूँगा. And the second part, I'll talk about the mathematical derivation from the Bohr theory. And the third part होगा applications actually, जो Bohr theory का applications on the hydrogen system. That's all. So yeah, so before starting the video, so मेरा ये request है आप सबकी पास जो please subscribe to my YouTube channel and especially if you want to take online coaching from me, please ping me in my WhatsApp number and the Telegram channel and which is given in the description box and also in the front page of my video. You can contact me as well if you like the video and also let me know how I can improve the video and what do you need extra जो आप लोगों को एक्स्ट्रा चाहिए ये जो वीडियो को अच्छा से समझने के लिए और टॉपिक को अच्छा से समझने के लिए just let me know because this can also improve me and also also help other people जो सबको हेल्प कर सकते हैं तो ठीक है चलिए स्टार्टिंग में जाते हैं तो पहले हम लोग ये देखेंगे जो पीजीटी का जो कोर्स है उसका जो सिलेबस उस सिलेबस में डिफरेंट टॉपिक्स है मैं एक्चुअली पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ मैं आज जस्ट वन पेज ही मैं डाला इधर मैं पूरा सिलेबस नहीं सबका सामने करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ जो ये बोर मॉडल है ये थर्ड यूनिट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है ये बोर मॉडल उसके बाद ये बोर मॉडल एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड उसके बाद आएगा डी ब्रॉय थ्योरी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्लासिकल वेव इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस प्रोबेबिलिटी थ्योरी सब कुछ आएगा तो मैं एक की बाद एक मैं डिस्कस करूंगा I start with this structure of atom because ये मेरे को बहुत important लगता है और straight forward भी लगता है. Anyway, I will cover whole topic actually. I mean, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो देखेंगे at the end of the year or maybe at the end, before the exam, I will cover whole topic and it will help you all to prepare for the KVS PGT exam. अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो तो पहले मैं डिस्कस करूंगा बोर मॉडल एंड इट्स सिंपल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ओके जो जो बाद में आएगा एनीवे तो बोर मॉडल के पहले मैं शुरुआत करता हूँ और दो मॉडल से जो एकदम एकदम पहला मॉडल है जो मतलब शुरुआत की एकदम पहला मॉडल है मैं बोल सकता हूँ क्योंकि this is the kind of a basic foundation of the atomic structure theory वो है थॉमसन मॉडल so सर जे थॉमसन ने ये मॉडल को डेवलप किया so what is inside this model so according to जे थॉमसन so the atom is actually a hard sphere and positive charges are uniformly distributed in a sphere in which electrons are embedded तो समझने के लिए ऐसे बोलना इजी होगा जो मान लीजिए आपका पास एक वाटरमेलन है आपने उसको काट लिया तो वाटरमेलन की अगर
अगर एक साइड आप देखें तो क्या होगा, वाटरमेलन के अंदर जो वाटरमेलन का सीड्स होगा वो ऐसे एम्बेडेड रहता है। जो पूरा रेड पोर्शन होता है ना वाटरमेलन का, वो आप समझ लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज है, और जो सीड्स उसका ऊपर रहता है वाटरमेलन का रेड पोर्शन का ऊपर, वो नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे हम आप लोग सोच सकते हो। तो मतलब क्या है, actually the negative charges are distributed over the positive charge, or over the mass which is positively charged, right? But the drawbacks of the models is like it fails to explain the atomic spectra. Why? Because atomic spectra actually it's a line spectrum. So what it gives, actually you do not, so if you see the spectra from an atom, you do not see continuous spectrum. उसका मतलब है आप कॉन्टिन्यूसली लाइन नहीं देखते हो, मतलब नहीं आता है ये लाइन। तो एक्चुअली पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी में एक लाइन आता है, उसके बाद एक दूसरा फ्रीक्वेंसी में आता है, एक तीसरा फ्रीक्वेंसी में आता है। जो ये लैम्डा है ये एक फ्रीक्वेंसी है, और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में आप डिफरेंट लाइन आपको मिलेगा, लेकिन कुछ कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, मतलब एक के बाद एक मतलब एक के बाद एक कॉन्टिन्यूअसली नहीं आएगा। ये एक्चुअली ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया व्हाई इट्स लाइन स्पेक्ट्रा, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एक्चुअली। एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी चाहिए, बिकॉज पर्टिकुलरली एक एनर्जी चाहिए जिसका करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन होगा, राइट? तो so this is kind of a line spectra, this spectra is a kind of a foundation of the modern quantum chemistry. Anyway, ये मॉडल से तो क्वांटम का कुछ चीज एक्सप्लेन कोई कर नहीं सकता, तो that's why it's severely failed. Another drawback was like actually it's a contradiction with the classical theory of electromagnetism. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो क्लासिकल थ्योरी है जो है, so the system with a distribution of positively charged and negatively charged actually is very very unstable. It's not stable. So it is not possible from the theory of classical electromagnetism. जो एक्चुअली मैं बोलूँगा जो मेजर ड्रॉबैक है, जो कॉम्प्लीटली ये जो जे जे थॉमसन का मॉडल को डिस्कस कर देता है, वो है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज दैट वन? सो इफ यू लुक एट द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, सो सी हियर, ये आप एक्चुअली आप मतलब इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप में क्या होता है, सो यू स्टार्ट with the radiation of alpha particle. ओके, तो अल्फा पार्टिकल का रेडिएशन से स्टार्ट करते हो. सो व्हेन इट पासेस थ्रू ए स्लीट, सो ये एक स्लीट है, स्लीट मत का अंदर से ये पास करता है, एंड देन इट्स फॉल ऑन ए गोल्ड फॉइल. जो ये है एक गोल्ड फॉइल. तो ये गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करने के बाद क्या हम लोग क्या देखते हैं, तो 90% रे, एक्चुअली दीज 99% रे, सॉरी, ये कॉम्प्लीटली फॉइल से सीधा विदाउट डिफ्लेक्शन आ जाता है, कुछ नहीं डिफ्लेक्शन होता है, और ओनली 1% रे डिफ्लेक्ट होता है. तो तो इससे क्या क्या समझ में आता है, सो इट्स कम्प्लीटली रिजेक्ट्स द थ्योरी ऑफ जे जे थॉमसन, बिकॉज अगर इफ यू हैव ए लाइक ए hard sphere in which you have like a distribution of positive charge and negative charge are embedded, so the positive अगर पूरा sphere में distributed है, तो if it's stuck with a पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा से पार्टिकल पॉजिटिवली है, और ये आपका जो स्फीयर है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज से फिल हुआ है अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन. अगर ऐसा टाइप का सिस्टम है तो इसके ऊपर अगर स्टाक करेगा और इसके ऊपर अगर फॉल करेगा, तो 99% एक्चुअली डिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव जो सेम टाइप का चार्ज है वो मतलब वो रिपेल करेगा, तो वो डिफ्लेक्शन होना चाहिए. तो नहीं हो रहा है. इसका मतलब है जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एटम इज एक्चुअली वॉइड, और इसमें कुछ भी नहीं है. अगर नेगेटिव चार्ज भी होगा तो थोड़ा तो डिफ्लेक्शन होगा ही, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का क्लोज में आएगा तो डिफ्लेक्ट होकर नेगेटिव चार्ज का पास में जाना चाहता है, क्लोज जाएगा, राइट? तो इसका मतलब होता है इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट वॉइड है, पास कर रहा है.
So that's the major experiment. So इसका ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन की बाद प्रोफेसर रदरफोर्ड ने क्या किया, तो उसने बोला जो जे थॉमसन का मॉडल है वो उसका जो एजम्पशन था वो a hard sphere full of positive material, positively charged material is wrong. तो उसने तब कब क्या बताया, उसने बोला देखो जो जो मेजर कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब एटम का जो दो कंपोनेंट है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दैट्स ट्रू, but actually positive charge is concentrated on a very tiny region at the center of the atom. This is called nucleus, and this can be also proved from his scattering experiment also, because as I said you, like 99% पास करता है लेकिन 1% स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होके जाता है। तो इसका मतलब है बहुत ही स्मॉल रीजन में पॉजिटिव चार्ज का पूरा मास है जिसके ऊपर ये अगर फॉल करता है तो उसका डिफ्लेक्ट होके वो चला जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही लेकिन बहुत ही टाइनी स्पेस का अंदर होगा। सो दैट्स योर न्यूक्लियस पार्ट। देन उसने क्या बताया जो सेकेंड में, जो इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around the nucleus and balances the total positive charge of the nucleus. इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तो अगर आपका न्यूक्लियस इस बहुत स्मॉल टाइनी पोर्शन में है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है जैसे जस्ट लाइक द सोलर सिस्टम, मतलब प्लानिटरी सिस्टम में सन को सेंटर करके जैसे प्लैनेट्स ऐसे घूमता रहता है, सेम ये कर रहा है, जस्ट लाइक द सेम सिस्टम। And actually the total positive charge of the central nucleus is balanced by the total negative charge of the electrons. So that was the main theory. But इसका ये ब्रदरहुड मॉडल का भी कुछ ड्रॉबैक्स था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज को सेंटर करके घूमेगा तो इट विल ऑलवेज रेडिएट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल fall to the nucleus just following a spiral path, जैसे ये स्पाइरल पथ फॉलो करके इसके ऊपर फॉल करेगा। तो but that's not true because our system is stable, right? So according to Rutherford theory, ये जो मॉडल according to Rutherford model ये ऐसे स्टेबल होना नहीं चाहिए। So actually Rutherford model is Rutherford model is also not true. And also the major thing is like if the electron follow a spiral path and radiate the energy to fall on the nucleus, ये क्या होगा, तो इसका वजह से हम लोग को एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, बिकॉज ये एनर्जी रेडिएट करके 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 पूरा ऐसे आके न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कर रहा है। उसका मतलब हम लोगों के पास एक एनर्जी होगा, एनर्जी का स्पेक्ट्रम होगा जो एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस, विच इज नॉट द लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये दो ड्रॉबैक है, बट एक्चुअल में हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को तो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, जो मैंने पहले भी बताया, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं, लाइन का स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ये दोनों ही अगेंस्ट है जो दो ऑब्जर्वेशन, मतलब दोनों ही अगेंस्ट है हम लोगों को, हम लोगों को जो against the stability of the atom and also against the observation from the spectroscopy, right? तो उसका बाद क्या हुआ, बोर ने प्रोफेसर नील्स बोर ने एक थ्योरी लेके आया। तो अकॉर्डिंग टू हिम लाइक बोथ जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल fails to explain the the atomic spectra, right, or the line spectra, right? So and also like stability of the atom. So what Professor Bohr has done, so he gives postulates. So ये postulates हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो फर्स्ट postulates हम लोग ये वैसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन revolves in some specified circular orbits. Please note कीजिए, so he actually mentioned that electrons revolves in some specified circular orbits around the nucleus, right? The specified orbit ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, स्पेसिफाइड करके एक स्पेसिफाई कर दिया होगा। इसके बाद उसने बोला these permitted orbits जो separated from each other and have the
have the angular momentum, energy नहीं होगा, ये होगा angular momentum, have the angular momentum which are integral multiple of, again ये h by 2 pi होगा, which are a integral multiple of h by 2 pi और h का, right? तो एक्चुअली क्या इसका मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस को मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को सेंटर करके इधर रिवॉल्व करता है और ये पार्टिकुलर एक ऑर्बिट में ही रह के रिवॉल्व करता है, मतलब ये बीच में नहीं, ये एक्चुअली रहता है either in this orbital or this in orbital. It cannot stay in between these two orbitals, right? So that's the major thing. It cannot stay in between these two orbitals. And the energy of these specified orbitals are fixed, and angular momentum is like an integral multiple of this h by 2 pi. तो इसका मतलब है, अगर मान लीजिए ये हम लोग नंबर 1 और इसका क्वांटम इसको हम इसका इन हम अगर 1 मान लेते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये होगा h by 2 pi और इसका होगा 2h by 2 pi because it's the second orbital. Now come to the second postulates. So according to the second postulates, so electron do not radiate. ये भी एक interesting है जो Rutherford में नहीं था. So actually according to Rutherford, actually it can radiate energy and as a result it will fall down on the nucleus. But according to Bohr, electrons do not radiate or accept energy while they revolve in those orbital orbitals. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में रह के अगर रिवॉल्व करता है और घूमता है, तो क्या होता है, ये एनर्जी एक्सेप्ट भी नहीं करता है और एनर्जी रेडिएट भी नहीं करता है. ये एक्चुअली एक स्टेशनरी, these particular types of orbital we call it stationary states, because in these states actually, so agar as a question as what is a stationary states, the answer is like the electron do not radiate or accept energy from these types of states, and it comes from the Bohr theory. So it's actually the stationary states. Okay. So and then what he said, that's Coulomb force of attraction between the nucleus and the electron is balanced by the centrifugal force. So centrifugal force. So क्या होता है? So actually, if you look at this picture, so like if this is Q2, if this is the position of the nucleus and this is the position of the electron, so the Coulombic interaction force, that is Q1 into Q2 by R square, and this K is the constant. That's the Coulomb interaction force is actually balanced by the centrifugal force. जो force actually this direction में feel होगा, no, so this will be the direction of the velocity, not the direction of the centrifugal force. It's exactly opposite to the force of the Coulombic interaction. So इस direction में वो feel करेगा centrifugal force और इस direction में feel करेगा वो interaction Coulombic interaction force, and जिसका वजह से क्या होगा, एटम particularly उस ऑर्बिटल में रह के वो रिवॉल्व करेगा, वो मतलब कहीं नहीं जाएगा, मतलब वो it will not fall on the nucleus or it will not go away. It will particularly stay in that orbital. So क्या है, तो this centrifugal force which comes from the classical physics, that is what is mg squared by r, will be equal to the Coulombic force, that is qk into q1 q2 by r squared. Now this q1 and q2, as I said here, it's the charges of the electron and the nucleus, and r is the radius of that particular orbit, right? And m is the mass of the electron. Now according to third postulate, so in electron, so now comes in the another part, which actually explain the concept of spectroscopy, what I already discussed. So मैंने बोला था spectroscopy के बारे में, ये line spectra का origin कैसे हम लोग explain कर सकते हैं. So this can actually helps you to understand. So Bohr said that when electron jumps from one orbit to another orbit, it emits or absorbs a definite amount of energy. ये नोट कीजिए, स्पेशली a definite amount of energy ये either absorb करेगा, emit करेगा,
to go from one orbit to another orbit. So actually this gives the concept of quantization. So क्यों? क्योंकि ना ये particular energy चाहिए, हर energy में ये jumping नहीं possible नहीं होगा, particular कुछ energy में ही jump हो सकता है. So that means the quantization of energy. A quantization of energy is actually required, right? So this can be understood if you look at the picture here. तो ये पिक्चर में अगर आप देखो तो सपोज मान लीजिए ये n इक्वल टू 1 ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, और दिस इज योर न्यूक्लियर, and if this is the energy of your first orbit and E2 is the energy of your second orbit, so if you apply energy of E2 minus E1, then only an electron can go from n equal to 1 to n equal to 2, or vice versa. Like the electron will radiate an energy of the amount of E2 minus E1 to go from, or to come down from n equal to 2 to n equals to 1, right? इसका बीच में ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता. मतलब अगर मान लीजिए ये दो, मतलब E2 minus E1, if E2 minus E1 is 5 electron volt, so if you supply 3 electron volt or 4.5 electron volt, you cannot see any jump of electron from n equal to 1 to n equal to 2. So that's the concept. I think you all like the, so it's simple, yeah. I think you all like the video of on this Bohr model. If you want to know more and if you want to follow the other parts of the Bohr model, please follow my video, please follow my YouTube channel, and please contact me if you want to if you want to learn more about the quantum chemistry and the whole chemistry, or if you want to prepare yourself for the upcoming KVS PGT exam or any other state level exam. Thank you.